Hello friends, welcome to SSP Math. I am Shivaji Pawar. Today we are going to start Alembertz ratio test in sequence and series. So before starting this, if you really like our videos, then don't forget to subscribe our channel. Okay. So today we will start Alembertz ratio test. Now in sequence and series, this test is very important. Means we can solve maximum number of problems using ratio test. In short, we will say here ratio test. Okay. So what is ratio test? If series un is a series of positive terms and if limit n tends to infinity un upon un plus 1 equal to L, limit n tends to infinity un upon un plus 1 equal to L, then series un is convergent if limit is greater than 1, means L is greater than 1, L is the value of limit. Series un is divergent if L is less than 1 and test fail if L equal to 1. So what is this un plus 1? This un plus 1 is n plus 1 term of the given series and un is n term of given series. So first find ratio. This ratio test is, so find ratio un upon un plus 1 and then take its limit. If limit is greater than 1, then using ratio test we can say that given series is convergent. If limit is less than 1, then given series is divergent, and sometimes if we get suppose limit equal to 1, then ratio test is fail. Okay. So when we use this test, if un involves factorial, means given series होती है un, उसमें यदि factorial की term है so we can use this ratio test. Okay, now sometimes suppose if we get limit L equal to 1, then ratio test is fail. Ratio test fail हुई तो इसका मतलब ऐसा नहीं वो series हम छोड़ देंगे. So we have to check that series is convergent or divergent using another test. So if ratio test is fail, then we have to apply next test, and next test is Rabe's test. Now what is Rabe's test? When we use this test, if ratio test is fail. Okay, statement of the state test is if series un is a series of positive terms, means these tests are all applicable for positive term series. Okay, so if series un is a series of positive terms and if limit n tends to infinity, n into un upon un plus 1 minus 1 is equal to L. देखो रेशियो टेस्ट में हमने ऑलरेडी un अपॉन un प्लस 1 रेशियो फाइंड किया होता है. यदि रेशियो टेस्ट फेल हो गई तो ये जो रेशियो होता है un अपॉन un प्लस 1, उससे 1 सब्सट्रैक्ट करो, na मल्टीप्लाई करके अगेन टेक इट्स लिमिट, and if value of that limit is greater than 1, then by Rabe's test we can say that given series is convergent. If value of that limit is less than 1, then by Rabe's test given series is divergent, and if value of this limit is equal to 1, then Rabe's test is also fail. So when we use this test, if ratio test is fail. Okay, now we will take some problems on ratio test in today's video, and in next video we will take problems on Rabe's test separately. Okay, so first one is problem ऐसा mention नहीं होता using ratio test check whether the series is convergent or divergent, or using Rabe's test or using comparison test ऐसा mention नहीं होता. By observing problem we want to decide that. Okay, so when we use ratio test, if in un factorial term present है और some power of means un में n की power present है, तो हम क्या कर सकते हैं, if n is present in power of un, then we can use root test also, we can use ratio test. Okay, so first problem is test convergence of this series. So first problem है nth term of series given है, means series un given है, series un given है series n स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू n. देखो यहाँ पर ये n जो है 3 की पावर में प्रेजेंट है, सो कंपैरिजन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल हियर. मींस if we compare LHS with RHS, then we can write un is equal to n square upon 3 raised to n. So n is present in power of 3 here, so we have to use ratio test. Comparison test is not applicable here. Okay, so how we use ratio test? What is the statement of ratio test? In ratio test we want un plus 1. What is un plus 1? Un plus 1 is the n plus 1th term of un. This is n term of given series. In n term, if you put n equal to n plus 1, then we get n plus 1 term. So n के जगह पर सिर्फ n plus 1 पुट करना है हमें. n plus 1 का स्क्वायर आएगा अपॉन 3 रेज टू n plus 1. उसके बाद इसका रेशियो un upon
un प्लस 1, ये रेशो क्या आएगा n स्क्वायर अपॉन 3 रेस टू n अपॉन दिस। सो ये इसे डिनोमिनेटर मिला तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। ओके, अब इसका हमें लिमिट लेना है, लिमिट ग्रेटर देन 1 आए तो सीरीज कॉन्वर्जेंट, लेस देन 1 आए तो डाइवर्जेंट। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट लेना है इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर इंटू इसका प्रोडक्ट है 3 रेस टू n प्लस 1, हाउ वी राइट 3 रेस टू n इंटू 3। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, पावर स्प्लिट कर सकते हैं, अपॉन 3 रेस टू n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर आया। ओके, सो यहाँ से कैंसिल क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3 रेस टू n कैंसल, रिमेनिंग टर्म से 3n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो लिमिट के लिए यहाँ से n कॉमन लेना है हमें, बिकॉज ये इंफिनिटी फॉर्म है। सो इफ वी टेक n कॉमन फ्रॉम दिस, देन वी गेट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3n स्क्वायर अपॉन, यहाँ से n कॉमन लिया तो उसकी पावर 2a, n स्क्वायर आएगी 1 प्लस 1 अपॉन n ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस n स्क्वायर गेट कैंसल, put limit n equal to infinity, so 3 upon 1 plus 1 upon infinity का स्क्वायर आएगा। so this is 3 upon 1 plus 0 का स्क्वायर equal to 3। so value of limit is 3 and 3 is greater than 1। if 3 is greater than 1, then by ratio test we can say that given series means series un is convergent। देखो कितना सिंपल है प्रॉब्लम। ओके, देखो दोस्तों, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स, मीन्स जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देन we will start second problem here. Second problem is series un is equal to, test whether the series is convergent or divergent. So series un is equal to series, this is very important problem, series n varies from 1 to infinity 4 into 7 into 10 up to so on 3n plus 1 divided by 1 into 2 into 3 up to so on n. Okay, so this is most important problem, how we check this series is convergent or divergent. So listen carefully here. First write down nth term of this is 4 into 7 into 10 up to so on 3n plus 1 upon 1 into 2 into 3 up to so on n. So ये un हुआ तो इसके बाद un plus 1 क्या आएगा, यहाँ पर देखो un plus 1 ही इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर सीरीज स्टार्ट हो रही 1 से इन्फिनिटी तक, यदि ये सीरीज एक्सपांड किया हमने तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, n इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पर देखो लास्ट टर्म में n इक्वल टू 1 पुट किया तो 4 मिलता है हमें, 4 अपॉन 1 मीन्स 4 अपॉन 1 आएगा, प्लस n इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 इंटू 3 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 मीन्स नेक्स्ट टर्म आएगी 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2, प्लस थर्ड टर्म आएगी 4 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। इन दिस वे मीन्स देखो थर्ड टर्म में सेकंड टर्म की टर्म काउंट होती है 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2, फर्स्ट सेकंड टर्म में 4 1 आता है, सेकंड टर्म में 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2। तो इस टाइप की सीरीज रही तो n प्लस 1th टर्म में पहले nth टर्म आएगी, nth टर्म मीन्स ये n एज इट इज लिखना है हमें पहले, और इसके आगे वाली टर्म होगी n plus 1, 4 into 7 into 10 up to so on 3n plus 1 as it is आएगा। एंड इसके आगे यहाँ पर n की जगह पर यदि n plus 1 पुट किया तो 3 into n plus 1 क्या आएगा, वो 3n plus 3 and plus this one that is 3n plus 4 मिलेगा, डिवाइडेड बाय इन डिनोमिनेटर हियर 1 into 2 into 3 up to so on n as it is आएगा, and n की आगे वाली टर्म आएगी n plus 1. So this is the n plus 1 term. Now find ratio un upon un plus 1. So un upon un plus 1 is equal to un first write 4 into 7 into 10 up to so on 3n plus 1
divided by 1 into 2 into 3 up to so on n अपॉन un प्लस वन मीन्स इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, मीन्स 1 into 2 into 3 up to so on n into n plus 1 divided by 4 into 7 into 10 up to so on 3n plus 1 into 3n plus 4. ओके देखो इस टाइप का प्रॉब्लम आया है ना, तो un प्लस वन में आपको पहले un लिखना है, उसके आगे वाली टर्म n प्लस वन लिखनी है. सो ऑब्जर्व दिस केयरफुली. 4 to 3n plus 1 get cancelled here and 1 to n get cancelled. So remaining terms are only n plus 1 upon 3n plus 4. Now find its limit. So limit n tends to infinity un upon un plus 1 equal to limit n tends to infinity n plus 1 upon 3n plus 4. So take in common from numerator and denominator here. So limit n tends to infinity, ऊपर से n कॉमन लिया तो 1 plus 1 by n मिलेगा. From denominator also take n common, so here 3 plus 4 by n. Okay, so this n cancel. What is limit here? Limit is 1 plus 0 upon 3 plus 0 equal to 1 by 3, and 1 by 3 is less than 1. So therefore by ratio test series un is divergent. So this is the solution. So we will take problem number 4 here. N cube plus 1 upon 2 raised to n plus 1. So 4 here nth term of series given है, un is equal to n cube plus 1 upon 2 to the power n plus 1. Problem number 3 you try. If any doubt then ask in comment section. So from this how we write un plus 1? Un plus 1 is here n plus 1 cube plus 1 divided by 2 to the power n plus 1 plus 1. Okay, so un upon un plus 1, find ratio here, un upon un plus 1 is equal to n cube plus 1 upon 2 raised to n plus 1 multiply by 2 raised to n plus 1 plus 1 upon n plus 1 bracket cube plus 1. So take limit here. Limit n tends to infinity un upon un plus 1 is equal to limit n tends to infinity un की वैल्यू देखो n cube plus 1 upon 2 to the power n plus 1 into 2 to the power n plus 1 plus 1 upon n plus 1 bracket cube plus 1. सो लिमिट के लिए हमें n कॉमन लेना है, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिला. सो फ्रॉम दिस टेक n क्यूब कॉमन. n क्यूब कॉमन लिया तो ब्रैकेट रहेगा 1 plus 1 अपॉन n क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 raised to n कॉमन लो, 2 raised to n कॉमन लिया तो 1 upon 1 plus 2 raised to n मिलेगा. मल्टीप्लाई बाय दिस 2 raised to n plus 1 कैन बी रिटन एज 2 raised to n, मीन्स 2 raised to n plus 1 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 raised to n into 2. वहाँ से 2 raised to n कॉमन लिया तो 2 plus 1 upon 2 raised to n रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से n क्यूब डायरेक्ट कॉमन लिया, n क्यूब डायरेक्टली कॉमन लिया तो रहता है 1 plus 1 upon n का क्यूब प्लस 1 upon n क्यूब मिलेगा. ओके, so this n cube get cancel, this 2 raised to n get cancel, and put limit here. If you put limit, then we get 1 plus 0 first one, second में 2 plus 0 यहाँ पर divided, because 2 raised to infinity is infinity, 1 upon infinity is 0. Same here 1 plus 0, here 1 plus 0, and यहाँ पर आएगा 1 plus 0 का cube plus 0. So I think 1 into 2 is 2 upon 1, so limit is 2 and 2 is greater than 1, therefore by ratio test series un is convergent. By ratio test series un is convergent. Then problem number 5 is also simple. That is problem number 5. Nth term given है un is equal to n cube upon n minus 1 factorial. तो इससे n plus 1 टर्म क्या आएगी, un plus 1 is equal to n plus 1 bracket cube upon n plus 1 minus 1 factorial, means n factorial आया हो.
So find un upon un plus 1 and take its limit. So limit n tends to infinity, un upon un plus 1 equal to limit n tends to infinity un n cube upon n minus 1 factorial multiply by n factorial this upon n plus 1 bracket cube. So how we find limit n factorial? How we write n factorial can be written as n into n minus 1 n minus 2. So is equal to limit n tends to infinity, limit n tends to infinity n cube into n factorial can be written as n into n minus 1 factorial, means एक ने decrease होता है. So here n minus 1 factor already present है, so n factorial n into n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial. यहाँ से n कॉमन लिया तो n क्यूब मिलेगा, 1 plus 1 by n का क्यूब आएगा. Okay, so this n minus 1 factorial get cancel, this n cube get cancel. So लिमिट क्या आएगा? लिमिट आएगा इन्फिनिटी अपॉन 1 plus 0 की पावर 5 इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1. So by ratio test series un is convergent. Okay, similarly you try problem number 6 at home. 6 and 3 you try these two problems at home with the help of this 1 2 4 and 5. In next video we will take the problems on Rabbit's test. Thank you. यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए for new updates. Thank you.